Yes, sir. Anurit, have you attended the class? Volume adsorption? Adsorption coefficient? Yes, sir. Right. So what is that adsorption coefficient? As I told you, this is the volume of a gas. Volume of the gas measured at STP or reduced to at STP. Dissolved in unit volume of solvent. At experimental temperature, and 1 bar is called as a adsorption coefficient. मीनिंग क्या है इसका? तो मीनिंग है आपके पास ना कोई यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट है. यूनिट वॉल्यूम मीन्स दैट कैन बी 1 मिलीलीटर, दैट कैन बी 1 लीटर, वट एवर यू कैन चूज एज यूनिट की इतने वॉल्यूम में डिजॉल्व कर. लेट इट बी एट 1 लीटर. इसका जो टेम्परेचर है वो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर. क्लियर है? कोई भी टेम्परेचर जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेट इट बी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई और भी टेम्परेचर हो सकता है. एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार. अब आप इस कंटेनर में गैस को फिल करते हैं, गैस को प्रेशराइज करते हैं डिजोल्व करने के लिए. किस कंडीशन पे करते हैं? अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे करते हैं. मीन्स 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट गैस का डिजोल्व हो जाता है वॉल्यूम वाइज, दैट इज कॉल्ड एज ए अल्फा. और सर अल्फा इज इक्वल टू वी अपॉन वीपी, ऐसे मैंने कल डिफाइन किया था. व्हाट इज स्मॉल वी? वॉल्यूम ऑफ द गैस dissolved, and capital V is the volume of the solvent, Volume of solvent. and P is the pressure of the gas. Right? कल हमने ये डिस्कस किया. फिर हमने कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था हेनरी लॉ, और ये कहा था कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. एंड फिर ये कहा था कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू के एच इंटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ. एंड फिर हमने डिस्कस किया था के एच की प्रॉपर्टीज. राइट? KH value is depending upon the temperature. At high temperature, the KH value becomes more. It means if the KH becomes more, the solubility will become less. And for any particular gas, is the particular value of KH. Right? Different gases have different solubility. And उसके बाद हमने कुछ डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ दिस हेनरी लॉ. नंबर 1 एप्लीकेशन में डिस्कस किया था कोल्ड ड्रिंक्स में. राइट? फिर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सेकंड हमने डिस्कस किया था deep sea divers. Right? Deep sea divers, we are using the helium, not the nitrogen, because helium is less soluble in the blood. अनुज आपने वीडियो सुन लिया पूरा? राइट? लास्ट में उसके एंड में हमने एप्लीकेशन डिस्कस किया है. एंड इसके बाद में एक एप्लीकेशन और किया था हमने, दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स. इंडियन ओशन में कम है एज कंपेयर टू द अटलांटिक ओशन, बिकॉज जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी. राइट? That was the application. Now, today's topic, write down limitation of Henry law. Write down limitation of Henry law. Write down number 1 limitation. This law is applicable only under ideal condition. This law is applicable only under ideal condition.
Ideal condition means at low pressure and high temperature. Low pressure and high temperature. Number 2, the gas must not dissociate or associate. It means the gas should have same molecular mass in solvent as well as in gaseous phase. अब इसका मीनिंग समझते क्या होता है. सपोज आई से आई हैव एन H2S गैस. गैसेस फेज में H2S है. इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है. 1 + 1 2 एंड सल्फर 32, टोटल इज इक्वल टू 34. लेकिन जब इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, डिसोसिएट लाइक H पॉजिटिव H नेगेटिव भाई, इट डिसोसिएट्स इनटू द आयंस. अब मॉलिक्यूलर मास में चेंज आ जाएगा. इट बिकम 33 नाउ. गॉट इट. सो this law is not applicable for those gases which do not undergo dissociation, which do undergo dissociation or association. It should not undergo dissociation or association. Am I clear? Now the third application. Gas should not react with the solvent. No reaction between solvent and gas. No reaction between gas and solvent. I have an ammonia and H2O. See, with solvent it is reacting to give ammonium hydroxide. If this happens, it means Henry law is not applicable here. Henry law कब applicable है? जब कोई रिएक्शन नहीं होता है. राइट. अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे इस सिस्टम पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. आइडल हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है. Am I clear? Yes. Yes, sir. So अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स. राइट डाउन न्यूमेरिकल. Henry's law constant. For the solubility of nitrogen. Gas in water at 298 Kelvin is 1.0 10 to the power 5 atmosphere. The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. What is the number of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure. Just note down the question, then I will tell you how to solve it. Right?
Henry law constant, it means this is the KH value is given to you. Number 2, mole fraction nitrogen, it means mole fraction X of nitrogen is given to you. Right? What is the number of N2? What is the number of moles of, what is the number of nitrogen from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure. See now how to solve it. We know this formula, pressure of that nitrogen will be equal to mole fraction of nitrogen multiplied by the total pressure. ये total law मालूम है हमें, total law. So I can say 0.8 into 5 atmosphere. So I can say it's a 4.0 atmosphere. It means the pressure of the nitrogen is 4 atmosphere. The total pressure is 5 atmosphere. And the mole fraction of nitrogen is 0.8. It means the pressure is equal to 4 atmosphere. And now we know this thing. Pressure of nitrogen is equal to now KH into mole fraction of nitrogen. From here, we are given the pressure, we are given the KH. I can find out the mole fraction of nitrogen. That is equal to now pressure of nitrogen upon KH. Pressure of nitrogen is equal to 4 atmosphere. KH value is already given to you, 1.0 10 to the power 5 atmosphere. So 4 into 10 to the power minus 5. This is the KH value. Mole fraction. And what is mole fraction now? Number of moles of the nitrogen upon number of moles of the water plus number of moles of the nitrogen. Here is the mole fraction formula. Number of moles of one component upon total number of moles. So mole fraction of nitrogen is equal to number of moles of nitrogen upon number of moles of water. हम नाइट्रोजन की वैल्यू को नेग्लिजिबल मान करके नेग्लेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए. So mole fraction of nitrogen we have already calculated, 4 into 10 to the power minus 5. Right? Upon number of moles of water. So number of moles of nitrogen is equal to 4 into 10 to the power minus 5 into number of moles of water. So 4 into 10 to the power minus 5, number of moles कितने होंगे यहाँ पर? 10 मोल आपको ऑलरेडी दिया. So I can say 4 into 10 to the power minus 10 mole. Am I clear? Yes. Yes, sir. पूरा कैलकुलेशन मैंने बताया है इसमें. इस कैलकुलेशन में कोई आपको डाउट है पूछिए. No doubt? Yes, sir. बल्कि हाँ बोलिए, अश्विन बोलिए. I said number of moles of nitrogen. So it should be 4 into 10 raised to the power minus 6 or minus 10. Sorry. 10 It is to the 10 by power 4. minus 4. Minus 4. Calculation. Yes. Am I clear now? Yes, sir. Yes, sir. Now, let us do another question now. Write down. If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin,
how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water. Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. KH for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. Right, we have been given this value. Now let us understand what is the question. We have been given the partial pressure of nitrogen and KH value. And we have to calculate how many millimoles of the nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water. Right. So we know this formula, pressure of the nitrogen would be equal to mole fraction of nitrogen into KH value. So I can calculate here mole fraction of nitrogen is equal to pressure of the nitrogen upon KH value. So pressure of nitrogen is equal to what? 0.987 bar and KH value is 76.48. This is the bar and this is the kilo bar. तो किलो बार के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So 0.987 bar upon 76480 bar. From here I am getting the mole fraction of nitrogen. Am I clear? Yes, sir. And now I need to calculate the number of millimoles. तो mole fraction basically number of moles calculate कर सकते हैं यहाँ से. Number of moles of nitrogen upon number of moles of nitrogen plus number of moles of water. एक बार number of moles आ जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमोल भी आ जाएंगे. This value is already given to you, 2.9, 1.29, 10 to the power minus 5. Number of moles of nitrogen can be calculated. और हमें दिया है 1 liter of water, means 1 kg of water. The number of moles means weight upon molecular mass, 1000 upon molecular mass 18. This is 55.5. From here I am getting the number of moles of the nitrogen. How much? 7.16 10 to the power minus 4 mole. Okay. Now you, Yes, sir. now you multiply with the 1000, you will get here number of millimoles. Ten to the power minus 1. So 0.716 millimoles. मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखाया आपको, मेथड बताया है. इसमें किसी को डाउट है? पलकिन I can't hear you. No, sir. Okay, fine. किसी को डाउट है? अक्षर, अनुरीत?
go to next question now. Let us take up some more questions based upon this. Wait on the question. One more question. Write down the Henry law constant means KH value for oxygen in water is 4.34 into 10 to the power 4 atmosphere at 25 degrees Celsius. If partial pressure of oxygen in air is 0.2 atmosphere, under atmospheric condition, calculate the concentration in moles per liter of dissolved oxygen in water in equilibrium with air at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. Note down the question, then we analyze the question, then solve the question. See, the KH is given to you, number 1. Number 2, we are given the partial pressure of the oxygen is given. Calculate the concentration. Concentration means number of moles per liter. तो अगर हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लें तो मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें तो कैलकुलेट हो सकते हैं. सो वी नो दिस फॉर्मूला. Pressure of the nitrogen is equal to mole fraction of nitrogen multiplied by the what? KH value. राइट, तो यहां से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे थे. मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन अपॉन KH वैल्यू. Partial pressure we are given here 0.2 atmosphere. KH value is already given to us 4.34 into 10 to the power 4 atmosphere. Calculate this value 4.6 10 to the power minus 6. Okay. And now we know the mole fraction of nitrogen is equal to number of moles of nitrogen upon number of moles of nitrogen plus number of moles of water जिसमें dissolve किया है. You know that? Palkin, getting me? Palkin? Yes, sir. 4.6 10 to the power minus 6 that we have calculated here. Get the number of the moles of nitrogen. Water amount कितना है? Per liter means 1000 upon 18, 55.5. From here get the number of the moles. That is coming out to be equal to number of moles of the nitrogen is coming out to be equal to
2.55 into 10 to the power minus 4 मोल्स, और यही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर है, बिकॉज 1 लीटर में हम डिजोल्व कर रहे हैं. तो 2.55 into 10 to the power minus 4 moles per liter. I hope it's very clear now. Ask me if you find any difficulty. Okay, done. Yes. Okay, just give me just a minute please. Right now मैं आपको एक कुछ क्वेश्चनियर भेज रहा हूँ right now in our telegram group, right? Solve it today only. कल क्लास नहीं, कल संडे है. मंडे को जो क्लास होगी उसमें उससे पहले आपके पास मेरे पास आ जाना चाहिए, राइट? जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज. इन न्यूमेरिकल में कोई डाउट है अभी तक? Excuse me, sir. यस, कुछ बताओ. So the value in moles per liter is the concentration of oxygen dissolved in water. यस, नंबर ऑफ Okay, sir. मोल्स पर लीटर. Check the telegram right now. I had to send you 2 pictures. One for the numerical, one for the subjective question. Right? So this is to be done by tomorrow. Day after tomorrow we will have class, right? Before that you must be able to send. Okay, Shmin, got it? Palkin? Yes, sir.
Now next write down another topic. Palkin, can you hear me? Yes, sir. You want to say something? No. Write down vapor pressure. Write down vapor pressure. First of all, I'll explain what is this vapor pressure, what are the factors affecting vapor pressure, and then relate this vapor pressure with the solution, right? So here I have a beaker closed, and here I have some liquid in there. Let it be water, let it be alcohol, let it be carbon tetrachloride, or any liquid, whatever you can think of. And these are the number of some molecules that I'm showing in the upper layer only. These are the molecules which are present in the upper layer. And here I have connected it with manometer. Here I can measure the pressure. Initially, the pressure will be same. Level of mercury will be same in both the lanes. All clear? Cut बनाते हैं इसको. Wait a minute. Wait. It's something like this. Up to this we have the mercury. It is all filled with mercury. Here we have vacuum. Here we have no pressure because vapors are zero. Getting me, everyone? But at a particular temperature, any temperature, maybe room temperature, maybe any other temperature, these particles are evaporating. So this complete layer will be evaporated. Then second layer will be ready for evaporation. And the level goes down. It was initially here and now it has gone down. The number of vapors goes on increasing. The number of vapors goes on increasing. Right? After some time, it is our just observation. It is our observation that level of water becomes constant.
Now we say at a particular temperature, right? There is evaporation going on. The liquid layer becomes constant, and these vapors now collide with each other. Understand? These vapor collide with each other, collide with the lid, collide with the wall, and during this collision, these vapors again convert back to liquid. We can say it is a condensation. First of all, it was evaporating, and now it is condensing back. A stage reaches when I can say rate of the evaporation is equal to rate of condensation. A stage reaches when rate of evaporation is equal to rate of condensation. The two processes are occurring simultaneously. Right? Under this condition, they are also exerting pressure on the mercury also. It goes down, it goes up. See the manometer. This is the measurement of vapor pressure. X mm of mercury. This is the vapor pressure. Okay. Understood the concept? What is the vapor pressure? So write down. Vapor pressure may be defined as pressure exerted by the vapors of a liquid on the surface of liquid at a particular temperature at the stage of equilibrium. At the stage of equilibrium. This is called as the vapor pressure. Pressure exerted by the vapors of a liquid on the surface of a liquid at the stage of equilibrium. Equilibrium means when we have rate of evaporation is equal to rate of condensation. Both are there. Then we say it is the stage of equilibrium. Am I clear? What is vapor Yes. pressure? Yes, sir. Now, next write down factors affecting vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. It depends upon number one, nature of liquid. When I talk about nature, it means we are talking about the intermolecular force of attraction. If the intermolecular attraction is strong, vapors will be less formed. Yes or no? अगर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो वेपर बनना मुश्किल होगा, इंट्रैक्शन वीकर है तो वेपर्स इजिली बनेंगे. Now I am giving you some examples here. Here I have ether, dimethyl ether, and here I have ethanol. दो मॉलिक्यूल ईथर के बीच में कौन सी फोर्स ऑपरेट करती है बताएंगे मेरे को? अगर हमारे पास लिक्विड है ईथर का
तो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होंगे, है ना, कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो कौन सी फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में ऑपरेट करेगी? विल इट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल और वेंडर वॉल? मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। मेरा क्वेश्चन क्लियर है सभी को? मेरा क्वेश्चन क्लियर है सभी को? दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑपरेट करेगा ये दो पार्टिकल आपस में ज्वाइंट रहेंगे? ऑप्शन 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन 2 डाइपोल डाइपोल, ऑप्शन 3 आयन डाइपोल, ऑप्शन 4 वीक वेंडरवॉल। कौन सा फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में ऑपरेट करता है? ये मैंने आपको सॉलिड स्टेट में बहुत डिटेल में कराया मैंने आपको। एशमिन विल टेल। वैंडरवॉल। वेंडरवॉल पोलैरिटी नहीं है, बहुत कम पोलैरिटी, तो कुछ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह सकते हैं, ये सुनो यस पोलैरिटी है। और अल्कोहल के मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स ऑपरेट करे दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के बीच में? देखिए यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल है, एक का पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, इस इंटरेक्शन क्या कहते हैं बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल? कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल? डाइपोल डाइपोल। अरे नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम वेपर प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ईथर का, ये जो डाई इथाइल ईथर पता है, इसका वेपर प्रेशर अल्कोहल के कंपैरेटिवली ज्यादा है। एक टेम्परेचर टी मैंने बना ली, इस टेम्परेचर टी पर अल्कोहल के वेपर्स कम बनेंगे, ईथर के वेपर्स ज्यादा बनेंगे। इसके वेपर आसानी से बनते हैं, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। एम आई क्लियर? यस सर। यस। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा नंबर वेपर्स बनेंगे, कैसे नो? अगर Yes, sir. तो वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर भी राइज करेगा। द ग्राफ विल गो लाइक दिस। दोनों का वेपर प्रेशर बनने पड़ेगा, लेकिन ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू द अल्कोहल। Palkin, can you hear me? Done? Ariman? Yes, sir. सर अल्कोहल के वेपर ज्यादा बनेंगे? नहीं बच्चे, ईथर के उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसमें इंटरेक्शन वीकर होती है, जिसमें इंटरेक्शन वीक होती है, उसके वेपर बढ़ाना इजी होगा। नहीं, जिसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है
और ईथर में डाइपोल डाइपोल हो रही है तो डाइपोल डाइपोल वीक कर रहे हैं। जब वीक फोर्स अट्रैक्शन होगा तो उसके वेपर बनाना इजी होगा। गेटिंग मी नाउ अश्विन? Yes, sir. Yes, sir. So there are two factors. Number one is the nature of the liquid, and number two, it depends upon the temperature. Vapor pressure is directly proportional to the temperature. कितना ज्यादा चेंज आता है? This is given by the Clausius-Clapeyron equation. Clapeyron equation that is given by logarithm of P2 by P1 is equal to delta Vep H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. 1 upon T1 minus 1 upon T2. T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है P1 और T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है P2। Am I clear? Till now, Yes, any sir. doubt? Right? Yes. No, sir. क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओके, No, sir. होमवर्क हो जाएगा जितना मैंने काम दिया आपको। ये करना Yes, जरूरी sir. है। अनुरीत Yes, sir. आपके लिए, अनुरीत आपके लिए, ठीक है? ये दोनों तो कर लेते हैं, आप नहीं करते। शुरू हो जाइए बात, ठीक है? तो क्लास में जब परसों क्लास होगी तो होमवर्क मैं आपके सामने ही कुछ चीज़ें चेक करूँगा, ठीक है? आपका राइटिंग पैटर्न जैसे हर बार डिस्कस करते हैं, राइट? वो सब कुछ हम करेंगे। कल क्लास नहीं है, कल संडे है, राइट? तो नॉट डे आफ्टर टुमारो इवनिंग 9 o'clock एंड स्टार्ट द न्यू टॉपिक। अभी मैं क्लास यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ, राइट? बिकॉज अब चैप्टर टॉपिक खत्म हो गया, न्यू टॉपिक विल बी लेंथी वन, विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे ओनली, राइट? इतने टॉपिक्स को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके आनी है। ये हेनरी लो पर बोर्ड में क्वेश्चन श्योर आता है, हर बारी में आता है। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir.